हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल। आज हम लीट कोड का एरे का प्रॉब्लम देखने वाले हैं। प्रॉब्लम नंबर 1672। इन दिस प्रॉब्लम द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज रिचेस्ट कस्टमर वेल्थ। दिस इज अ 2D एरे। आपने को इसमें निकालना है इन इन एरे ऑफ एरे। इट इज नथिंग बट द 2D array. In this array we can find how many there are found there are sum means in this array what is the sum of this in this particular array is nothing but the 1 plus 2 plus 3. Sum is nothing but the 6. So in this array also found that their sum 3, 2 or 1. So 3 plus 2 plus 1 is equal to 6. So compare these two sums and found the max sum. So this is basically it is a problem. How to solve that problem? By using the array, and how to traverse that array in 2D array. So basically we can create a one method to found that integer array, like it is nothing but it is 6. So we can create a one method to and array to traverse each element in the array. How to traverse it I can tell you. So create one variable to integer as a max. So after that we can it is initialized to 0, and to traverse each element in the array like that based on array length. What is the length of array to given in this program? So let's see the also create another variable in the array int sum equal to 0. So we are adding the each element and store in the sum variable. So after that traversing the write another for loop for inside for, and it is a traverse each element in the array like that and convert it to into the sum. So 1 plus 2 plus 3 equal to 0 equal to 6. So basically it is a converted into the integer format, and return value is also integer. So in this array creating the element and solving that using the Java code. So चलते हैं अपने कोड पर, हाउ टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम इफिशिएंटली वे एंड बेस्ट ऑप्टिमाइज्ड वे. First create a file, give the name of found that richest sum. Okay, class public int array of array. It is an array of array we are given in the problem. So 1 2 3 and another array is 3 2 1. So basically this is a one of the array 2D array. So we can create and found that this array what is the maximum of in this array. To how to solve that problem, create a one method like static method. We are given in static method, and we are return the integer value. So create one method maxsum int array of array
create one max variable equal to 0, initialize the value into 0, create a for loop to traverse the array length. What is the array length? And it traverse the each element in the array. So create one another sum variable and also write a for loop, start from 0, it is another name is a j, and start from 0, initialize to 0 up to array of I dot length. Means first array I is nothing but it is 0 and array of 0 is nothing but this is the first array. This is the first array of length. Means यह array के length तक अपने को जाना है, मतलब ये array के अंदर array है तो ये पहले array को अपने को traverse करना है. So traverse the first array and compare and add in the array into the sum. Means sum equal to sum array plus array of I plus or array of j. So it is a first store in the sum array. After that, if sum is greater than max, so sum is a store into the max. Sum is a store into the max and return the max value. So basically I is nothing but the 0. 0 is nothing but 0 index. So 0 index में कौन सा array है? 1 2 3 3. ये 0 index पे array है. So ये for loop क्या करेगा? array पे traverse करेगा और ये for loop क्या करेगा? array के अंदर array पर element को traverse करेगा. So array of I is nothing but the 0, j is nothing but the 0. Means ये 1 0 sum is a 0 and ये आएगा 1. So 0 plus 1 is nothing but the sum is क्या हो गया? अभी 1 हो गया. सम में अभी 1 स्टोर है तो मैक्स के साथ कंपेयर करेगा और मैक्स की वैल्यू क्या है? अभी 0 है. सो 1 ग्रेटर देन 0. सो सम है वो सम एक मैक्स में स्टोर हो जाएगा और ऐसे करके हर एलिमेंट इसमें स्टोर हो जाएगा और फाइनल आउटपुट अपने को शो होगा. सो सबसे पहले आपको इसको कॉल करना पड़ेगा system.out.println and max sum. सो ये अपने को क्या आउटपुट दिखाता है देखते हैं फाइनल. यस इसने 6 दिखाया, ये करेक्ट है. सो कोई भी एलिमेंट इसमें डाल चेक कर दो एंड चेंज कर दो और आउटपुट देखिए क्या मिलता है. सो ये लीट कोड का एक सबसे आसान प्रॉब्लम था. आपको यह प्रॉब्लम अच्छा लगा, टेक्निक अच्छी लगी, ऑप्टिमाइज वे, टाइम स्पेस एंड स्पेस एंड कॉम्प्लेक्सिटी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूले. तो आपको कौन से टॉपिक पर और वीडियो चाहिए सो कमेंट करें. थैंक यू.